Assalamu alaikum. Today it's lecture number 8 and I hope everyone is fine. And today, before going the same routine for this lecture, let me just have a minor recap that what we have learned in the last lecture. Now, as I said, instead of staying local, understanding the natural resource management issues at the local level, let's take a roller coaster to the global level issues. And we also made this clear that global issues are very much affecting us at the state level, at the country level. Now, some of the challenges that we have talked about is that population आपकी बहुत ज़्यादा grow कर रही है. Then we talked about migration. Then we also discussed that water, which is a key ingredient in terms of your economic growth, that is becoming a scarce resource, and the way we are exploiting or the way we are overusing water, it might affect the development path of all the countries, not developing but developed countries also. और फिर मैंने एक terminology use की थी that we are talking about water footprints, कि जी एक product को बनाने में कितना water की consumption हो रही है. फिर we moved on after looking into the different challenges कि जी minerals किसी country के पास ज़्यादा हैं and how it can actually exploit or how it can make another country volatile with the changes in prices. उसके बाद discussing some challenges, then we moved on to the why your natural resource management has changed, how it has changed, what actually prompted them to change the natural resource management approaches. Earlier we have been talking about that government plays a very crucial role क्योंकि state में ये जो natural resources हैं, they comes under the control of the government और सारे they have been planning. But as the time has evolved, things have turned differently. और उसके अंदर government का role क्या होता जा रहा है, minimum हमने किया, and we started bringing out the participatory approaches, we started bringing about public, and in these approaches, the first question that came across was that why government has established a very minimum role, why governments are not being trusted that much. तो उसमें हमने देखा कि whatever promises government has been making कि जी natural resource management होगी, environmental sustainability होगी, government has not been able to fulfill those promises. वो जो integration या collaboration हम चाह रहे थे, या जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हमारे environmental variables become much more better, that was not coming across. So therefore, those were the government failures. अब government failures की वजह से we started trying for new approaches to natural resource management. And in the new approaches, the first one we started talking about was regionalization. जिस तरह हम eco zones, different zones में हम कर लेते हैं, तो हमें उस तरीके से देखना है. And we talked about कि जी regionalization के क्या benefits हैं और उसके क्या faults हैं, because this is a new experimental approach. Then after regionalization, I talked quite a bit about markets. Okay, markets play a very crucial role. Markets give you the incentive, markets give you the incentive to protect the environment, markets give you incentive to utilize the environmental resources in an efficient manner. So markets की हमने बात की, और markets की बात जब हमने की तो we took an example of water market. जो हम challenge में हमने बात की थी that water is such a key and crucial element in terms of your economic development, तो हमने देखा कि water markets किस तरीके से behave कर रही हैं. Claims जो हम करते हैं, in reality we also came across that it wasn't that beautiful story. Water को जब आप market के अंदर लेके जाते हैं, उसके लिए आप market instruments use कर रहे हैं, that is not much more fruitful. Again,
reverting back to my stance that this doesn't mean that market tools are inefficient. Maybe their application or maybe किस resource के ऊपर हम वो market approach लगा रहे हैं, that is also very critical. Later on, the last approach that we talked about was the co-regulation, and I always said that जब हम co-regulation की बात करते हैं, we talked about this environmental management systems, और उसके अंदर ISO 14001 की हमने बात की, that this is an environmental management system which is voluntarily compliant सब करते हैं, and what we are actually looking into that के management system हम अपना environmental management system at a firm level, at an organizational level, we develop it in such a way that हमारे अंदर continuous improvement रहे. Now जैसे जैसे आपकी improvement आती रहती है, आपके environmental variables बेहतर होते रहते हैं. Over here it's more of a collaborative approach where the government supports it and the government monitors it. The third party आपकी आती है, and the companies, the organizations who are actually hurting the environment, they start thinking in an environmental manner. They become environmental sensitive, and this has helped. Now, the new trend is that there are lots and lots of organizations who are actually going for this environmental management system. So this was a brief story. When we are talking about these challenges, we are talking about these approaches, how good these approaches are. Shall we be going for such approaches? Shall we be experimenting with such approaches or not? Now, today's lecture is also, I love it. Reason being, it gives you a very different perspective. A different perspective in a sense, we are thinking out of the box. We are thinking out of the box, we are thinking out of our geographic boundaries, and we are trying to bring other variables कि किस तरीके से ये challenges हमारे complex होते जा रहे हैं. If you see कि environmental problems शुरू में भी थी, environmental problems अब भी हैं, और environmental problems future में भी आएंगी. And it's not just environmental problems, there is economic, social, cultural, religious, बहुत सारी हैं. लेकिन problems की nature अगर आप देखें, they are becoming more and more complex. ठीक है, अब उस complexity it is becoming as a challenge कि हम उस challenge को किस तरीके से करें. So planning is not linear. The issue comes कि जो हम चीज़ देखते हैं that okay, it is a very straightforward process. आपने इकट्ठे किया, कुछ documents को review किया और आपने एक future strategy बना ली. It is not the case like this. It's a very complex situation. और इस complex situation के लिए we need some really good planners who understand the pragmatic picture. यानी holistically उस situation को देखें जहाँ पे और factors भी क्या कर रहे हैं आपके play करते हैं. Now, in the last lecture I also said कि we have been talking about these natural resources and we have been seeing them as an issue of scarcity. ठीक है, SCARCITY scarcity. ठीक है कि resources abundant नहीं है, resources कम हो रहे हैं. और उसके अंदर फिर हमने पिछले lectures को अगर आप recap करें, renewable, non-renewable, long run, short run, time frames को हमने देखा कि जी resources जैसे जैसे population grow करती जा रही है, हमारे resources कम होते जाते हैं. Very much true. लेकिन I coined one term in the last lecture and that was resource security. अब resource security क्या होती है? It's an emerging concept. और इस concept में हम क्या देखते हैं कि if someone asks you the definition, remember this one. This is a very good and a concise definition. It is basically, जब हम कहते हैं जी resource security है क्या? It is basically capacity to meet fundamental energy and material demands for the socio-economic development of a nation and the daily living conditions of its people. Very comprehensive. और अगर ये चीज़ है then we are resource security हमारी है, और अगर ये चीज़ नहीं हो रही then we are resource insecure. क्या है? Capacity to meet fundamental energy and material demands. Energy की एक हमने बात की और साथ material demands भी अगर हमारी पूरी हो रही हैं, किस लिए? To have or to achieve socio-economic development of a nation and the daily living conditions of its people. Yani everyone is into it. It's not just the governments, it's not just the NGOs, it's the people and of all levels. अगर इन सारों की energy demands पूरी हो रही हैं, इन सारों की goods की needs पूरी हो रही हैं for your socio-economic development, yes, we can say that we are resource secure. अब objective क्या है? The objective is to ensure sufficient amounts,
feasible prices and stable and sustainable supplies. From the supply side हम देख रहे हैं कि resources हमारे पास इतने हों कि वो sufficient amount में हो. Present generation के पास अगर पानी नहीं है तो then we are resource insecure. If we do not have clean water, if we do not have clean air, if we do not have much fossil fuels, we are resource insecure. It might become a threat for the existence of our civilization. अगर आप पिछली civilizations को देखें, Maya civilization and Indus civilization को theories ये भी हैं कि because resources just finished, और resources और थे नहीं, and the people started fading out, or civilizations are now just, you can read them in the history books, they don't exist anymore. ठीक है? Now we have supplies in sufficient amount, we have feasible prices. It doesn't matter कि रिसोर्स अगर आपके पास है और बहुत abundant है, बट अगर उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो that I can't even afford it, it's not resource security. It needs to be in the affordable, feasible price. और क्या होनी चाहिए, ये भी ना हो कि उसके अंदर fluctuations आ रही हों. Fluctuations means कि जी आज है and the next year it's not there. No, it has to be stable and sustainable supply होनी चाहिए. अगर ये चीज़ें हैं, then we can say that we are resource security. फिर इसकी तीन chains हैं. There are three chains of resources. Number one, resource supply. First chain is resource supply, कि आपके पास जो supply line है. Second जो resource है उसकी value क्या है. कुछ resources की value बिल्कुल negligible है. Some resources have very high value. For example, अगर oil कम होने लग पड़े, it's going to be a very high value. There are certain minerals जिनकी value बहुत ज़्यादा high है. For example, diamonds. ठीक है ना, अफ्रीका के अंदर the mines that has diamonds, the resource value is very much high. ठीक है वो resource, but the value is different. The value of a diamond mineral versus the value of coal, both are minerals, but it is a different economic value. Then वो resources की benefit क्या है? So these are the three chains. Resource supply, number two is resource value, and number three is resource benefit. अब after talking about these three chains, then we have the three abilities when we are talking about the resource security. अब abilities में कौन कौन सी आ जाती हैं? Number one, we have ability to control the resource. ठीक है, it should not be uncontrollable. Number two, to safeguard the security. उस resource की security भी आप रखो, safeguard भी करें. And to encourage core innovation. Okay, ये ना हो that okay you are just using one resource और उसके अंदर कोई innovation नहीं, उसके अंदर आपने core innovation भी करते रहना है. I will give you an example of this oil. Oil exploration की techniques के अंदर it has drastically changed. ठीक है. Earlier, if you are looking into 40-50 years ago, तो हम जब oil exploration करते, our techniques were very different. What we are using in 2015, what we are using in 2016, what we are using and going to be in future, our oil exploration techniques are going to be different. अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं? We are using the computer models, we are using the holographics, so that you just go, you don't have to go inside yourself, and these technology by which you can easily explore the resources. So when we talk about the abilities, so we have the ability to control the resource, we have ability to safeguard the resource, and number three is that we have the ability to encourage core innovation. जितनी innovation होगी आपकी resource की जो exploitation है, जो management है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी. Now, how do you meet the challenge of resource, not security? Now, how do you meet the challenge of resource scarcity? अब, number one, how we can manage it. Number one is my innovation. वही जो हमने last slide में पढ़ा, that innovation helps you. Innovation actually gives you new techniques. Innovation actually gives you the breathing space so that you can exploit, or you can exploit maybe a negative connotation, so that you can actually reach, or you can actually explore that resource in a better way. So innovation जितनी ज़्यादा आप करते जाओगे, उतना ज़्यादा हमारे resource scarcity का challenge कम होता जाएगा. Then both innovation की जब हम बात करते हैं, technological and institutional. Usually when you ask students innovation, they just think that okay, it would be related to the new technology. No. अभी अगर हम again if you go back to the last lecture, तो हम बात कर रहे थे that was institutional innovation. कि जी आप government से
then you started moving to regionalization, you start moving towards market mechanism, you start moving to the core regulations. ये क्या थी? ये institutional innovation थी. What was the core objective? For the better sustainability of these natural resources. So therefore, innovation can be in many ways. Innovation is not just technological, it is basically also the institutional innovation कि हम ये different models use कर रहे हैं so that we can have better results. Second, अब क्या है कि जी चैलेंज हमारे जितने भी हमने पीछे पड़े थे दोज वर ऑल ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है ना. अब इन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज कोऑपरेशन, एंड द कोऑपरेशन इज नॉट जस्ट अमंग इंडिविजुअल्स, द कोऑपरेशन इज अमंग स्टेट्स, क्योंकि एवरी कंट्री इज अफेक्टेड बाय इट. Every country is affected by one global menace. If you look at tsunami जब आया तो tsunami was not just affecting Sri Lanka, it was not just affecting Indonesia, it was all the coastal belt में जितने भी countries उन सारों को उसने affect किया, ठीक है ना. So it was a global challenge. So उसमें what the best remedy is that we have to cooperate, we have to collaborate with each other, क्योंकि हमारी problems क्या हैं? They are common problems, and that could be achieved through किस तरह? नंबर 1, adaptation of existing rules. कि rules तो हैं but we need to adapt to them, we need to follow the rule, we need to implement the rule. Then rules के बाद फिर norms आ जाते हैं, norms के बाद principles and institutions आ जाते हैं, ठीक है. norms क्या होते हैं? किसी particular region के अपने norms हैं, those are the cultural values, those are social values, और वो क्या बन जाते हैं? आपके norms, but they are generally accepted, ठीक है ना. let's follow the norms. नंबर 2, principles आपने कुछ बनाए हुए हैं, कुछ हमने institutions बनाए हुए हैं. forestry का अपना एक institution है. फॉर एग्जाम्पल वाटर का इस तरह पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा इंस्टीट्यूशन है. डिज़ास्टर्स को अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है तो NDMA इज़ अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. अगर आपने मीट्रियोलॉजिकल वेदर चेंजेस को देखना है तो हमारा मीट्रियोलॉजी का डिपार्टमेंट है. तो हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स हैं. अब हर इंस्टीट्यूशन को करने के लिए वी नीड टू अडेप्ट टू देम, ठीक है ना. इफ़ वी अडेप्ट टू देम देन वी कैन सी कि जी आपकी कोऑपरेशन ज़्यादा लेवल में. इफ़ यू गिव सम, यू हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर हाउस एंड आई कम ओवर एंड आई वुड से कि जी आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दीज, आर यू गोइंग टू बी हैप्पी? No, you are just going to throw me out कि जी these are the norms and these are the values, these are the rules of my house, so you have to follow them. So respect it, try to follow them, and then we can counter this problem of resource scarcity. Then problems क्या करती हैं? They actually sometimes give you an opportunity of working together. अगर प्रॉब्लम हो ही ना, अगर ये ग्लोबल चैलेंज हो ही ना, व्हाई वुड वन कंट्री वुड ट्राई टू कोऑपरेट और हैव सम इंटरैक्शंस विद अनदर कंट्री? सो इट एक्चुअली we should not say it is a kind of blessing in disguise. We get to know about problems of other countries and we feel safe क्योंकि हमारे सिर्फ poverty सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, poverty अमेरिका में भी है. Poverty is also in these regions, and then we look out for some better common strategy by which we can counter these challenges. A global platform which governments of resource producing countries क्या होती हैं अगर हम इसको मैप करें? One is resource producing कि जिसके पास resources ज़्यादा हैं and which are giving the resources, and another one is resource consuming कि जी consume जो कर रही हैं. For example, Japan makes really good cars, but Japan के पास अपना steel है ही नहीं. It is importing mostly all of the steel. अब जो रिसोर्स प्रोड्यूसिंग है और जो रिसोर्स कंज्यूमिंग है उनको क्या करना चाहिए? आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि क्या हो? सो दैट वी हैव अ डिमांड एंड सप्लाई सिक्योरिटी. क्योंकि इफ द मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इफ दीज रिसोर्स प्रोड्यूसिंग एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग आर इन कॉन्फ्लिक्ट, इफ दे आर नॉट बैलेंसिंग ईच अदर, तो आपकी क्या आ जाएगी? Either you are going to face with the surpluses or you are going to face with the shortages. और आपकी market में क्या है? Disequilibrium है. And if there's a disequilibrium, that is not a good picture. We'd want markets to be stable. ठीक है? Now, अगर तो ये हम balance ले आते हैं, don't think कि जी सिर्फ resource producers को ही फायदा देगा. No, it is a mutual benefit for both resource producers and resource consumers. Why it is mutual beneficial? Because the codependency and balance of supply and demand being in the interests of both economies. ठीक है, दोनों economies में वो balance लेके आता है and it creates a
win-win situation. If you remember lecture 3 and lecture 4, we also talk about कि जी हमारी policy ऐसी होनी चाहिए कि it should not favor just one group of people, it should not favor just one country. Our policy mechanisms should in such a way that it should be a win-win situation. ठीक है ना? It's a hard process. You can't have a win-win situation all the time. But yes, should we stop trying? No. We should keep on trying and ultimately हम उस equilibrium point तक पहुंच जाते हैं where it's a win-win situation for both the parties. अब क्या आ जाता है कि जी हम in the recent years जब ये climate change का बहुत ज़्यादा issue आया तो एक नया discipline अब आ गया है. Earlier diplomacy was just considered कि जी हमारी foreign policy में it helps. No, diplomacy आजकल resource diplomacy है, आजकल climate change diplomacy है, क्योंकि when we are interacting at the state level, so what do countries do? They negotiate with each other, they try to collaborate, they develop partnerships so that कोई ऐसी situation है जहाँ पे it's a win-win for both the parties, or it's not just two parties, it may be for everyone. ठीक है. So एक नई डिप्लोमेसी की बर्थ होती है. Now we have to counter that challenge, to meet this challenge we give passage to a new diplomacy. What is that kind of diplomacy? It would require participation of multiple actors. As I said, it's not just uni or bi. It is multiple actors इसमें इन्वॉल्व होते हैं. और इसमें कौन कौन से हैं आपकी, अगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर हम देखें कि किस तरह हम रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, नंबर 1 इज योर सॉवरन स्टेट्स. सॉवरन स्टेट्स आपकी होती हैं, उसके बाद आपकी बिजनेस कंसर्न्स, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग एंड दे आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉट वेरी लेस रिसोर्सेज, दे आर यूजिंग मच 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 मोर रिसोर्सेज. ठीक है, तो उनको भी आपने लेके आना है. बिजनेस कंसर्न्स आर वेरी crucial when we are doing this natural resource planning. ठीक है. Then social entrepreneurs. Social entrepreneurs में people who are working for the nature. In the last lectures if you remember जब मैं चिपकू मूवमेंट वगैरह बता रहा था तो वहाँ पे ये social entrepreneurs हैं जो कि आजकल forestation, जो कि आजकल minerals, जो कि water management, जो कि wildlife conservatives हैं. These are all social entrepreneurs. Non-governmental organizations like environment की पाकिस्तान के अंदर there are lots of organizations which are working, but some of them are very famous. IUCN है, WWF Pakistan है. Then there are certain policy institutes who are rigorously working for environment like STPI है. So these are all institutions which are multiple actors which gives you a very different flavor of diplomacy. ठीक है ना, क्योंकि हर एक बंदा objective एक है लेकिन perspective they have a different perspective. Then there are knowledge institutions. Knowledge institutions, ये जो policy institutions होते हैं which are actually doing research on these organizations. फिर nowadays एक revolution आ रही है and we call that as the internet based groups. अब internet based groups are very powerful. They can develop, they can change your opinion in such a way that you start thinking the way they are, the way they want to. For example, internet groups के अंदर जो bloggers होते हैं, I'll give you the same example. ये जो Middle East के अंदर जो revolutions आए, people say कि technology का बहुत बड़ा role है. They play a very vital role in terms of bringing people on board, in terms of sharing the views. ठीक है. In the past few weeks, this technology की जो conferences हो रही हैं, they are saying it's a new medium of freedom of speech. I may be not a good speaker, maybe, but I have very good ideas. And I don't want to be in the limelight. तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना anonymous या अपना proxy name लेके I can start blogging and I can start sharing my views, and in this way I have developed an internet community. I have some followers. और जब मेरे को followers हैं, ये क्या है? He is basically has a voice. He has a platform where he can change people's views. A very simple example might be every one of you uses Facebook. आप अपना status update करते हैं या आप अपनी कोई statement लिखते हैं कि this is, so there are hundreds of people who start following you, who likes your comments. So there is an opinion building. So if you are talking with reference to the natural resources, तो आप एक क्या करते हैं, एक अपना opinion poll आप बना लेते हैं and people start following you. You have credibility. ठीक है. So ये जो internet based groups हैं, और फिर last but not the least हमारे जो individual citizens हैं. अब आप देखें कितने ज़्यादा we have these multiple stakeholders. They all have their own interests. They all have their own stakes. And do you think कि हम एक common objectives पे किस तरह आसानी से पहुंच सकते हैं? You need a new kind of diplomacy to reach or to achieve that objectives.
Then what are they doing? They are responsible global supply chains, ठीक है, and facilitate transformation of resources from resource producers into finished products and deliver to resource customers. ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं कर क्या रहे हैं? रिसोर्स प्रोड्यूसर्स हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस पर प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो फिर किसके पास चले जाते हैं? रिसोर्स कस्टमर्स के पास चले जाते हैं. आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल few weeks ago and that was कि जी इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टार्ट करते हैं नीड से. अब नीड को हम क्या डिफाइन करते हैं? नीड इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी और अ स्टेट ऑफ डिप्राइवेशन. जब तक नीड नहीं आती तब तक आप रिसोर्स को यूज नहीं करोगे. फाइन, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, आई लव इट. दूसरी साइड पे एक और वर्ड है कि जी ग्रीड. ठीक है, अगर नीड एक साइड पे है, ठीक है, तो दूसरी साइड पे ग्रीड है. फूड इज माई नीड, डायमंड माइट बी माई ग्रीड. ठीक है ना. अब दोनों का बड़ा आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरप्ले है. आई नीड फूड, ठीक है, इट्स माई नीड, एंड आई एम वर्किंग इन अ डायमंड माइन. There's a guy in Brazil who's a very rich person and he is having his 25th anniversary और उसने अपनी बेगम को diamond ring देनी है. ठीक है, I don't say it's a need, it's a kind of greed. ठीक है ना, it's not going to fulfill, like वो need की एक दूसरी form आ जाती है. So जब तक उसकी ये greed नहीं है that I need to have this diamond ring, तब तक ये जो अफ्रीका के अंदर एक आम माइन वर्कर है जिसकी नीड फूड है वो फुलफिल नहीं होगी. बिकॉज अंटिल ही डिमांड्स डायमंड ही इज नॉट गोइंग टू वर्क. इफ ही डजंट वर्क ही डजंट गेट मनी एंड इफ ही डजंट गेट मनी ही इज नॉट गोइंग टू गेट फूड. सो नीड और ग्रीड का बड़ा आपस में बड़ा जबरदस्त इंटरप्ले है. सो डेवलप्ड कंट्रीज में, माई अपॉलॉजीज टू देम, वहां पे ग्रीड, तो हमारी नीड है. तो जब डेवलपिंग कंट्रीज दे विल वर्क, उनकी ग्रीड के लिए काम करते हैं तो हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती है. सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सप्लाई चेन, ऐसे चलती है कि जी देयर आर सम रिसोर्स प्रोड्यूसर्स एंड देयर आर सर्टेन रिसोर्स कस्टमर्स. तो रिसोर्स कस्टमर्स जब तक कहते नहीं दैट वी नीड दीज थिंग, तब तक रिसोर्स प्रोड्यूसर्स चाहे कितनी ही रिसोर्सेज उनके पास हों, दे आर यूजलेस बिकॉज दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. दे माइट बी मैनेज्ड, बट व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ अदर पीपल. सो देयरफॉर ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसमें सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड यू हैव टू मेक दीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स वेरी इफेक्टिव. आपका रिसोर्स एक जगह से मूव करता है, दूसरी जगह पे चला जाता है. यू आर वेयरिंग अ स्विस वॉच, लेकिन स्विस वॉच यू आर वेयरिंग इट इन सम पुअर कंट्री. लेट्स से आपने सूडान के अंदर पहनी हुई है और चली वो स्विट्जरलैंड से, ठीक है, किस तरह वो आई है? ट्रेड हुआ है. अगर वो बनी है तो उसने कोई इन्वायरमेंटल रिसोर्स को डिग्रेड किया है तभी बनी है ना. सो देयरफॉर सो मेनी एक्टर्स in this supply chain and every actor has its own interest. Then what we have to do as natural resource planners, our objective is to conserve or to manage the resources in such a way कि needs पूरी हो जाएं, ठीक है, बट इट ऑल्सो रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि फ्यूचर जनरेशंस भी इनको यूटिलाइज कर सकें. नाउ व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली दैट वी एस्टैब्लिश सम बफर्स, बैरियर्स. ठीक है, एक बफर जोन आपने बना लिया फॉर द स्टोरेज ऑफ सम रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्स के लिए हम बफर्स बना लेते हैं, सच एज फूड, सच एज ऑयल, सच एज गैस. और ये क्या करेंगे? दिस कुड reduce the risk of some emergencies in the resource markets. अगर ये buffers नहीं होंगे तो आप सारा food एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, आप सारा ऑयल आज ही ख़त्म कर दोगे, और आप सारा जो गैस है, वाटर है, ये सारा कर रहे हैं. So we need to establish some buffers as planners, ठीक है, so that in terms of emergency what we do is that we can actually use this as a contingency plan. So in order to meet this resource scarcity, we need to establish some buffers. Then we need to bring efficiency in the resource usage in order to reduce waste. Japanese ke badi it's a very good philosophy that they say you have to minimize waste. Now the question comes, how much waste you want to minimize? The wastage minimize jitna wo kehte hain, it should be 99.999%.
इतना आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए और 0.001 समथिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कई प्रोसेसेस बनाए हुए, लीन मैनेजमेंट है, उसके बाद 6 सिग्मा है, दीज आर ऑल ऑपरेशंस प्रोसेसेस जो कि वो करते हैं। एंड वो कहते हैं जी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिटीरिएशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, और जब वेस्ट आप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं तो आपने उसको डंप भी करना है। तो स्टार्ट ही इस तरीके से करें दैट वी रिड्यूस द वेस्ट, वी जनरेट सम ऑपरेशंस इन सच अ वे कि जी आपका वेस्टेज मिनिमम हो जाए। सो किस तरह होगा? बाय हैविंग एन एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि जी आपने रिसोर्स को यूटिलाइज किया और इतना जितनी ज़रूरत है उतना ही यूटिलाइज करें, डोंट जस्ट ओवर यूज इट, ठीक है, डू नॉट एक्सप्लॉइट इट। सो देन द लास्ट over here that how we can meet the challenge of resource scarcity is to avoid future flashpoints caused by resource insecurity. States should consider क्या करना चाहिए? Delinking, do not delinking resource issues from the other concerns, particularly territorial disputes and geopolitical competition. As I said, situations are complex. जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप उसके अंदर और चीज़ें डालने लग पड़ेंगे तो इट विल फर्दर क्रिएट अ फार मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इट्स अ सिमिलर थिंग, आपने नूडल्स खाए होंगे, वी कॉल इट एज अ स्पेगेटी बाउल सिचुएशन। स्पेगेटी बाउल सिचुएशन इज बेसिकली कि हर चीज़ आपस में इंटरमिंगल हो जाती है। सो वी डोंट वांट दैट, वी नीड टू मेक इट सिंप्लीफाई। सो व्हाट futurists, what planners propose, because when you are talking about resource, when you're planning about resources, what you do is that you completely de-link. किसके साथ de-link करते हैं? From the geopolitical competition and the territorial disputes. क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को साथ लेके आओगे तो it will further aggravate the situation. अब नया concept, that is resource nationalism. ठीक है? I gave you, these are the buzzwords. Definitely they're going to help you. This is what is happening at present. ठीक है, इट्स नॉट इन द बुक्स, इट्स बेसिकली जो आजकल के प्लानर्स बात करते हैं। व्हेन यू विल गो रिसोर्स स्कार्सिटी, ओल्ड कॉन्सेप्ट, नाउ दे विल से कि रिसोर्स सिक्योरिटी, ठीक है, जहां पे हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, द न्यू बज़वर्ड कम्स, दैट इज द रिसोर्स नेशनलिज्म। ठीक है, अब रिसोर्स नेशनलिज्म क्या होता है कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज इन सच अ मैनर कि इट्स वेरी अनइवन। If you read this, you'll be amazed. Now, this is the distribution of resources among countries is very uneven. ये तो हमने पहले भी देख लिया, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में भी we have proven it कि जी resources की अगर distribution equal होती तो मे बी हम ट्रेड करते ही ना। अब resources की distribution is highly uneven. Why? Because it's natural. ठीक है, for instance, the 3 largest producers of some 19 resources. अब कौन से हैं वो resources? Like crop, like timber, fish, meat, fossil fuels, fertilizers account 56% of the global production. कितने पास है? कितने producers के पास है? Only 3 producers. It's highly uneven. It's highly skewed. ठीक है ना? 3 आपकी नेशन स्टेट्स हैं, उनके पास कितना है? 19 रिसोर्सेज ऐसे हैं विच एवरेज द 56% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन उनके पास है, जो भी हम पीछे बात करते हैं ग्लोबल प्रोड्यूसर्स एंड ग्लोबल कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। ठीक है ना? सो 56% वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, देन द एग्जाम्पल्स माइट बी चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, USA, Australia, European Union, Brazil, Russia, India, Indonesia are the dominant actors in the resource production. इनको हम resource producers कहते हैं, इनके पास production hubs हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे, if someone asks you who are the resource producers, then which countries, and they are basically China, ये वाला है। ठीक है, China, USA, India, Brazil, European Union, Australia, and Indonesia. Then there are certain countries, now just see कि जी domination कैसी हो रही है, और वो कहते हैं जी ये resources हमारे हैं, we are the carriers of these resources, nationalism यहाँ पे आ जाता है। These are, there are other countries that dominate production of 1 or 2 of the resources, such as oil. The moment oil आ जाता है, we say that there is Saudi Arabia. ठीक है, it is dominating in terms of oil. Then Iran, oil and gas. Then we have Argentina, soya beans.
देन यू हैव चिली, कॉपर, ठीक है। देन यू हैव पेरू, वो भी क्या करता है, कॉपर और जिंक के अंदर अपना वो उसकी डोमिनेंस है, प्रोडक्शन डोमिनेंस है। मंगोलिया, कॉपर एंड कोल, एंड मोजाम्बिक, वो क्या है, कोल एंड गैस के अंदर है। सो वही ग्लोबली अगर आप देखें कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, but look at the resource dominance that they are have these resources at their with them, ठीक है, they are dominant in their production now, and these are natural resources. अब having a dominant share of production, what happened that these resource markets increase intervention in the resource production by some countries. अब क्या करते हैं कि I know that I have this resource, no one else has. So what I do, I start dominating, I start intervening in the market. हम वही पहले बात कर रहे थे कि markets के अंदर stability लाने के लिए क्या है, that we need to match the demand and supply. अब in order to match the demand and supply, what is the main key? Independent variable आपका आ जाता है prices. अब ये क्या करते हैं, because they know that they are endowed with these natural resources, there is no one closer to them in terms of substitute. अगर है भी तो मे बी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. So what they do, they can start intervening in the production processes, they can start fluctuating the prices. अब क्या करते हैं, they start making the cartels. ठीक है. Now comes what is a cartel. Very important, common name in economic discipline, but what are actually cartels? Now, what are cartels? Cartels का जो concept आ जाता है that we are different countries endowed with same kind of product. Let's suppose oil. अब मेरी अगर dominance है, मैं 3-4 और countries को अपने साथ मिला लेता हूँ और producing the same kind of product, and we start controlling the price. And when we start controlling the price, the resource producer start controlling the price. अब उसने क्या किया, उसने market mechanism को fluctuation ले आया, ठीक है. And now what is कि ये वाला है, this is bad for the market. अब for example, oil producing जितनी भी countries हैं जिनके पास oil है, उन्होंने क्या start किया हुआ है, they made OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वो सारी इकट्ठी होगी और उन्होंने कहा जी हम ऑयल की प्राइसेस को डिक्टेट करते हैं. इज इट गुड? नो, इट्स नॉट. ठीक है. सिमिलरली ये ओपेक बनी थी 1960s के अंदर. देन वी हैव द नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स. ठीक है. नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स ने भी एक ओपेक के स्टाइल की एक कार्टेल बनाई और दे कॉल इट एज GECF. GECF means Gas Exporting Countries Forum. You will be amazed that after OPEC, another mineral which is being utilized और उसकी बहुत बड़ी cartel है, that is UPAC, Uranium Producing Exporting Countries. ठीक है. So ये जो cartels आ जाती हैं, ये क्या कर देती हैं, आपकी जो resources हैं उसके अंदर price fluctuations लेके आते हैं. अब इसके अंदर ये भी हैं कि जी जो वो there are other countries, it's basically a neighborhood effect कि you see your neighbor what he is doing तो I start doing it. जब उन्होंने देखा कि भी UPAC बन गया है, GE है वो और natural gas की आपकी organization बन गई, then you have OPEC है. So what you do is they get your rice producing countries and they also started making the cartels. Now if you see oil, gas, uranium, rice, all natural resources. What we are doing? We are trying to dominate it. We are trying to own it. We are giving price tags to it and we are controlling the prices. Who is going to suffer? Your consumers. ठीक है. Resource consumers and resource producers के अंदर अब क्या होने लग पड़ी? Tug of war होने लग पड़ी. ठीक है. अब the development of producers cartels has rendered integrated global supply chains increasingly more vulnerable because now they are controlling it. Now minor fluctuation in the price and your whole supply chain gets disturbed. You might have seen कि जी government कहती है कि जी internationally oil prices increase होगी and that's why I'm going to increase the oil prices over here. ठीक है. क्या हुआ? Cartels ने कर दिया. ठीक है. Because they just say कि जी now we are going to increase $2, हमने प्राइस ज़्यादा कर दी, so therefore आपकी domestically भी आपके. The moment
price of oil increases in your country, what happens? Everything's become expensive. ठीक है, and inflation आपकी increase होगी. So you see, global chain के अंदर कैसा एकदम fluctuation आती है, and it just create ripples in the whole economy, the receiving economy. Now, in addition to these cartels, अब government क्या करती है? Government भी is also one of a very performing actor in this resource management. What is a governmental intervention is to employ, क्या कर देती है? Export controls लगा देती है. ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स किस पे? ऑन सर्टन रिसोर्सेज. गवर्नमेंट बैन कर देती है कि जी सॉरी, यू कांट एक्सपोर्ट दिस गुड मोर देन इन दिस क्वांटिटी टू दिस पर्टिकुलर कंट्री और टू एनीवेयर. अब उसने जब एक्सपोर्ट कंट्रोल कर दिया तो अब रिसोर्स क्या हो गया? कंट्रोल हो गया. ठीक है, आपका जो मार्केट की जो स्टेबिलिटी थी, दैट गेट्स इम्पैक्टेड बाय इट. एंड फॉर एग्जाम्पल, चाइनाज कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ मेटल्स है, चाइना ने उसके ऊपर वो किया हुआ कि यू कांट एक्सपोर्ट दीज रिसोर्सेज. तो ये क्या है? आपकी रिसोर्स नेशनलिज्म आ गया. अब ऑन द अदर साइड, दिस वाज अबाउट रिसोर्सेज. नाउ वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक्स. लेट्स टॉक अबाउट पीपल. ठीक है ना, वो हाउ पीपल आर बिहेविंग और उसका क्या ट्रेंड जा रहा है. व्हेन वी से कि जी नेचुरल रिसोर्सेज आर टोटली intertwined or it is integrated with people also. So my demographic trends very horrific. We need to rethink about it. We need to revamp our strategy when we are talking about planning. ठीक है ना. अब उसके अंदर क्या है कि world population has grown significantly. ठीक है, by 2050 what we are thinking कि जी the world population is going to be 8.1 billion. और हमारा जो फर्टिलिटी रेट, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू गुड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, वो है लो हो गया. और अगर वो लो हो जाए तो 9.1 बिलियन हो जाएगा विद इंस्टेंट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी. एंड इट इज गोइंग टू बी 9.3 बिलियन किससे? विद मीडियम फर्टिलिटी. इट इज गोइंग टू बी 10.6 बिलियन विद कांस्टेंट फर्टिलिटी और 10.9 billion with high fertility. Just imagine 10.9 billion with high fertility by 2050. Your planet is going to explode. Right? Now, that is a very scary demographic feature. Over here, the population of people. अब आपकी जो aging हो रही है, that is also taking a very different phenomena. ठीक है, अब पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो कि 50 एज के थे, विच 50 एज और ओल्डर, इट हैज इंक्रीज्ड. कितना इंक्रीज हो गए हैं? 1.4 से 3.1 बिलियन. 2 बिलियन का आपका इजाफा हो गया आपकी एजिंग पॉपुलेशन में. ठीक है, बाय 2050. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, ऑल्दो अभी जो रिसेंट ईयर्स अगर आप देखें तो वहां पे देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द यंगर पॉपुलेशन, यूथ. ठीक है, तो यूथ के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. कहाँ पे? इन द मिडल ईस्ट एंड इन द लो इनकम कंट्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है. तो जो यंगर पॉपुलेशन है वो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा हो गया है. एंड दिस ट्रेंड विल बी मॉडरेटेड. कहा जाता है कि इट विल बी एक्सटेंडेड टिल द एक्सटेंट ऑफ 2050 तक दिस ट्रेंड विल कम टू नॉर्मल. Whereas in 2012 जापान के अंदर क्या हुआ? जापान एंड जर्मनी हैव matured beyond a median age of 45 years. They have crossed, and most European countries and South Korea will have entered the post-mature age by 2030. Now, देखने को ये सब numbers हैं. It's very good that, okay, my grandfather has lived a longer life and now people are having an aged lives. But what is happening? They are putting pressure on the resources. ठीक है ना, वो जो एक नेचुरल एक प्रोसेस था कि एक डिजीज आती थी एंड अ पर्सन वुड एन एवरेज लाइफ आपकी होती थी 60-65, वो अब एजिंग प्रोसेस आपकी बढ़ती जा रही है. नाउ विद द इंक्रीज इन द एजिंग पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा आपका एज बढ़ता जा रहा है, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग, दे बिकम बर्डन ऑन द इकोनॉमी. माई अपॉलॉजीज टू द ओल्डर जनरेशन, बट इट कम्स टू इट एक्ट्स लाइक अ बर्डन बिकॉज दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग बट दे आर टेकिंग अवे. अब इस पे क्या हुआ, एक यूएस में एक पेपर आया, उन्होंने कहा जी ये जो बेबी बूमर्स थे 1970s की जो पॉपुलेशन थी, नाउ दे हैव एज्ड, दे आर स्टिल हियर एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेरी रिच. अब वो जो ओल्ड एज्ड पॉपुलेशन है विच इज वेरी रिच, ठीक है, व्हाट आर दे डूइंग? अर्लियर व्हेन दे वर एक्चुअली अर्निंग द मनी, जब वो अपने यूथ में थे, ये जो
अब जो aged population है, when they were in their youth, they earned a lot of money and they developed industries. They gave a new spirit to entrepreneurship. Natural resources उन्होंने कमाल के उन्होंने इस्तेमाल किए. Now when they have grown old, what are they doing? They are now spending. Now पहले वो था saving mode में, now they are in the consuming mode. Now they are having big houses, they're having a lifestyle, whatever they wanted to do in their younger lives, now they're doing in their older lives. Now opportunities, जो financial opportunities या जो venture capitalists थे, वो तो अब सारा consume कर रहे हैं. So जो नई younger generation है उसको avenues नहीं मिल रहे for new entrepreneurial projects, क्योंकि सारा पैसा older generation के पास है. Very interesting social dynamic. Let's, for example, in China. China talks about its human capital, and yes, in terms of production it is very good. But what is happening, that one child policy, which used to be in play, and it was a successful policy in terms of they put out, the government made a good control on it. What they did, it has turned their youth, it has turned their younger human capital not that good. उन्होंने क्यों? Because grandfather, grandmother, ये आपके वो जो from the maternal side, grandfather, grandmother from the paternal side, maternal और paternal के दोनों grandparents हो गए, फिर parents आ गए, और जनाब एक उनका वो है one child है. अब grandparents भी उस बच्चे पे पैसे खर्च कर रहे हैं, paternal side वाला भी, maternal side वाला भी, parents भी कर रहे हैं. Now that boy or that girl is hugely pampered क्योंकि there is just one child. Now what is happening, what social phenomena is happening, that the younger generation is not as productive, is not as serious towards the development of a country, towards the growth projects as it was the older generation, because all the older generation is now investing all the money on the younger generation, fulfilling all kinds of their needs. So it is not making them such a constructive ones, but they are becoming very lazy, उसके बाद very वो spend thrift किस्म की वो generation अब create कर रहे हैं. ठीक है, slow process, we don't realize कि इसकी repercussions क्या होंगे. Similarly, aging जो होती जा रही है, older generation का जो लंबे spans of life आ रहे हैं, because there are life saving drugs, there are drugs that enhances your the livability. It is not just much more beneficial because it has actually stopped the natural aging process. Now it is actually giving them much more years to live. Now second demographic एक और feature क्या आता है, that migration massively हुए in the past few decades. A migration का जो major reason होता है, that you move from low economic hub to a higher economic hub, or that is one of the major reasons, because you are getting more money. Second might be conflict, कि जी इस particular area में श्रीलंका के अंदर या वहाँ पे वो Tamil Tigers fight कर रहे थे, so lots of people migrated towards Switzerland. Afghanistan के conflict आया, millions of Afghan refugees came to Pakistan. Migrations ये भी इस वजह से भी हुई हैं, ठीक है. But migration is going to be is a globalized phenomena, both for rich और जो poor countries हैं वो suffer करती हैं. Why? Because अगर पाकिस्तान से सारी all the workforce migrates, all the good doctors, engineers, they just move to to US or Canada, what happens to Pakistan? यहाँ पे development deficit हो जाएगी, यहाँ पे आपकी workforce नहीं होगी which can work upon it. ठीक है, क्योंकि आपका सारा जो human capital that flies away, brain drain आपका हो रहा है, ठीक है, and it is going to create serious problems. ठीक है. Now the pattern of global migration is changing, although the trend of young people migrating is likely to continue. अब older लोगों ने तो जाना नहीं, now the younger generation is moving along. अब क्या हुआ है, in Asia Pacific, in South Korea, Japan, China has already aging populations that we have already discussed, and a declining workforce, क्योंकि these people उनकी जो socio-economic conditions हैं, या ज़्यादा better economic opportunity तो West में है, so the best human capital, they have started migrating it. But future trend बड़ा मज़े का आ रहा है. What is happening, that in future more and more international immigrants will migrate to China, because China is a land of, just US होता था land of opportunity, now China is becoming land of opportunity. बहुत सारे उसने entrepreneurs, projects, economic prosperity वहाँ पे है, and this will particularly challenging. Why? यहाँ पे फिर से policy का issue आ जाता है. It is challenging for China because
इनके जो इमिग्रेशन लॉज हैं दे डज नॉट प्रोवाइड एनी frameworks for the incoming population. So if people migrate to China, उनके immigration laws में ऐसी कोई policy वगैरह नहीं है that how to deal with such population. So that is going to be an upcoming problem for Chinese. Now, future flash क्या होती है हमारी in terms of resource insecurity. ठीक है, अब resource insecurity में हमने पहले भी discuss किया that when the cartels are being formed, वो क्या कर रहे हैं, they are controlling the prices. अब volatility of prices is a problem for both resource consuming and producing countries with significant implications for किसके लिए, global economic security in the long term, because prices को से वो क्या कर देते हैं, सारी economy को shake कर देते हैं. Then अब volatility से क्या हुआ, it increases the risk margin. All of a sudden it increases the risk margin and it stops the investment. Investment नहीं होनी, growth नहीं आपकी होनी. ठीक है, now it stops the investment on the supply side. As a result, even the short term but frequent price fluctuations could lead to higher prices and greater supply insecurity in the long run. ठीक है, because of ये risk margins की वजह से, investment कम होने की वजह से आपकी supply एकदम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एक और reason क्या है आपकी, जो violent armed conflicts होते हैं. We have seen in the past and they have contributed a lot in terms of resource insecurity, and they have largely we also see that poor countries में ज़्यादा ये resource insecurities हैं, and the countries which are in the bad neighborhood may spill over, and countries with the median age below 25 years, ठीक है, वो उसके अंदर spillover effects आपके आ जाते हैं. ठीक है, then there are 3 regions इन्होंने experts ने identify किए हैं which are conflict prone. ठीक है, number 1, Africa, hub of conflicts. So many tribes, so many people, so many identities. Conflicts उनके चलते आ रहे हैं. अब क्या हुआ, from Senegal in the west to Somalia, Central Africa, Horn of Africa, आपकी instability है. आपका Central Africa Republic, Mali के अंदर, उसके बाद नाइजीरिया के अंदर, all these countries are conflict prone. जितना ज़्यादा आपका कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा उतने ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी. आई होप दैट यू पीपल हैव सीन दैट मूवी ब्लड डायमंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली. ओवर देयर दैट इज ऑल्सो, वो डायमंड पे किस तरह माइंस में काम करते हैं. इफ यू हैवंट डू लुक एट इट, एंड देन यू विल सी हाउ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिसोर्सेज आर वेरी मच इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. सेकेंड वो आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट वन इज अफ्रीका एंड द सेकेंड वन इज योर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. दे से इट्स अ जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. वहाँ पे जनाब टोटली इंस्टेबिलिटी है. दैट्स वेयर इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स इन पाकिस्तान, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आई. आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होती तो FDIs ने अगर आना है, दे माइट बी कमिंग फॉर दिस मिनरल एक्सप्लोरेशन, फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल दैट, तो वो आपकी रिसोर्स एक्सप्लोरेशन उस तरीके से नहीं होती. बट नाउ दे आर थिंकिंग दैट इफ present the way negotiations are taking place, if it continues, it might give a better picture and ये वाले conflict zone से ख़त्म हो जाए. The last one is your South Asia. South Asia is perhaps more than any other region. यहाँ पे जो conflict prone वो कहते हैं, because आपके resource constraints वहाँ पे combine हो रहे हैं with resource degradation. The problem with South Asia is that the World Bank की एक report आई, what they said that over here the issue is not the resource allocation, they said resource management. आपने अगर एक ट्यूबवेल चलाया हुआ तो 24 hours चल रहा है, they don't even know the worth of that, electricity भी ज़ाया हो रही है, and even if the water is not required for that particular land, and still they are giving water to it. वो कहते हैं जो resource management नहीं आप करते. And in this way, so societies के लिए क्या बन जाता है, एक tipping point आ जाता है that okay, what to do, and this could lead to a greater intra or interstate conflict. I think I did told you about that Afghanistan story, that when we have refugees from Afghanistan, so यहाँ पे conflict start हो गया. Between Pakistan and India, water has been the major conflict. Between Sindh and Punjab, water is another issue of conflict between the two provinces. At the local level, आपके different districts में आ जाता है कि जी allocation of resources किस तरीके से हो रहा है. इसके पास ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा agricultural feed मिल रही है तो इनको पानी ज़्यादा दे दें. उनको वो कोई agriculture के अंदर contribute नहीं करता तो उनको water की allocation अब कम कर दें. So all these are resource wars. अब unequal ये जो distribution है of resources, natural,
ठीक है, ये नहीं कि पानी हमने सारा उस साइड पे दे दिया, लेकिन इट्स एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स हाउ द मैप और द वर्ल्ड मैप इज has led to wider gap in living standards between 28 million of rich people and billions of poor. And this जो economic gap है, it is leading to or it is further intensifying the conflict. ठीक है, किस वजह से? Because there's a resource gap. Some countries have much more resources and some countries have almost no resources. ठीक है, अब वाटर पे अगर हम आते हैं, तो वाटर पे सबसे बड़ा जो अभी आता है द इंडस वाटर ट्रीटी. नाउ जस्ट गो बैक, एज आई सेड, स्टेट्स कैन सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय कोलैबोरेटिंग, बाय पार्टनरशिप्स. ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी सबसे बड़ी, इट वाज quite successful in terms of the water distribution between the two provinces between India and Pakistan has stood for more than 50 years. And water availability in that period has prompted some arbitration in order to settle the disputes resulting from. Then India जिस तरह अपने वो डैम्स बनाता है अपने रिवर्स पे, तो देन पाकिस्तान का फ्लो कम हो जाता है, तो फिर आपका फिर आर्बिट्रेशन, देन इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाते हैं. देन बट व्हाट कंट्रीज आर डूइंग, दे आर नॉट गन्स पकड़ के, दे डोंट स्टार्ट फाइटिंग, दे स्टार्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, दे स्टार्ट द नेगोशिएशन एंड दे स्टार्ट टॉकिंग इन टर्म्स. सो अभी इंडिया एंड बांग्लादेश का एक हुआ अकॉर्ड, द फारका बराज on the Ganges, it was signed in 1996, लेकिन अभी तक हमने उसको कोई इतने plausible results नहीं देखे कि जो उसका impact क्या हुआ because of this thing. Now coming back to these solutions, कि जी ये conflict हो रहे हैं, demographic changes आ रही हैं, आपके ये जो resource जो imbalance आ जाता है, cartels create हो जाती हैं, अब इसके solutions क्या हैं? As I said, number one is the cooperation, because without putting our heads together, we can't just solve any resource problem, because if the resource is at your end, no matter how much advocacy या मैं कितना कुछ करता रहूं, until we don't cooperate with each other, the problem is not going to be solved, because this without non-cooperation हमें कहाँ पे ले जाएगी? It will lead us to the conflict. ठीक है, over here when we talk about South-South cooperation, a brilliant example would be Brazil. ब्राज़ील का अगर आप देखें, ब्राज़ील इज एक्टिवली कोऑपरेटिंग विद द अफ्रीकन कंट्रीज. किस तरीके से? इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन बिजनेस. इसने क्या किया है? इसने साइंटिफिक कोऑपरेशन स्टार्ट की है, एंड इन सम वर्चुअल इंटरनेशनल लैबोरेटरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. नाउ यू डोंट नीड वो जैसे कहते हैं हार्ड बिल्डिंग्स कि जी वो कोऑपरेशन तब होगी, वर्चुअल. ठीक है ना, वर्चुअल सप्लाई चेन्स आ गई हैं. यू डेवलप वर्चुअल लैब्स वेयर यू कैन जस्ट डू द टेस्टिंग एंड यू कैन रन द एक्सपेरिमेंट्स, बट इट्स अ नॉलेज नेटवर्क्स. एज आई सेड, अब नॉलेज इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है. सो द कोऑपरेशन आपकी जो हो रही है ब्राज़ील और अफ्रीका की, इट्स एन अमेजिंग कोऑपरेशन कि दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग दीज वर्चुअल इंटरनेशनल लैबोरेटरीज. और टेक्निकल कोऑपरेशन के अंदर ब्राज़ील हैज सेट अप प्रोजेक्ट्स एंड ऑफिसेज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT. Not the terms of trade, but transfer of technology to Africa. By such cooperation, आपकी जो supply chains होती हैं, in terms of ये जो resources की जो होती हैं, they become more effective. There is much more cooperation between the countries, because दोनों की क्या create हम कर रहे हैं? We are creating a win-win situation. Then second, after South-South, we talk about the North-South cooperation. Over here, I have examples like North America and South America, Europe, Oceania. They have higher proportion of arable land per person and will continue to be sources of agricultural output to other regions. Agrarian है, उन्होंने cooperation किए हुए, and they are producing agricultural goods. अब future scenario अगर हम देखें, तो ये जो agricultural production है, it will move through trade, क्योंकि food production जो हो रही है वो ज़्यादा north में हो रही है, due to mismatch between world population distribution by region and distribution of arable land. Arable land वहाँ पे है, पॉपुलेशन यहाँ पे अगर ज़्यादा ग्रो कर रही है, वी आर द कंज्यूमर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स. तो अब फूड पहुंचेगा कहाँ से? बाय ट्रेड. सो वी नीड अ न्यू मॉडल जहाँ पे अब आ जाती है ट्रेड एंड एनवायरनमेंट. दैट विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स कि जी ट्रेड और एनवायरनमेंट का आपस में क्या लिंकेज आता है. देन आफ्टर नॉर्थ साउथ वी हैव दिस inter-regional cooperation at the regional level.
अब रीजनल लेवल पे वंडरफुल एग्जांपल है सेंट्रल एशिया में, अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपका आ जाता है कोऑपरेशन ऑन एनर्जी, फूड प्रोडक्शन अमंग द कंट्रीज। बेसिकली जो उनकी रिसोर्स एंडाउमेंट्स हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, उन्होंने बड़ा ब्रिलियंट सिस्टम बनाया है इन विच दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। रीजनल कोऑपरेशन में कौन सी आ जाती है, आपका किर्गिस्तान आ जाता है। किर्गिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर है, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाइड्रो पावर, एंड व्हाट आर दे डूइंग, दे आर एक्सपोर्टिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी टू काज़ाकिस्तान, टू चाइना, टू ताजिकिस्तान एंड टू उज़्बेकिस्तान। अब वो क्या कर रहे हैं, जो उनका रिसोर्स अबंडेंट हो जाता है, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इट। तो एनर्जी इज बीइंग शेयर्ड विद एट द रीजनल लेवल। फिर किर्गिस्तान इज ऑल्सो प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन ऑफ लैंड्स अंडर कॉटन, फॉडर, wheat, rice, आपका fruits, आपके vegetables in Uzbekistan and South Kazakhstan by evening out the dry and wet flow years। तो वो वहाँ से irrigation system उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये क्या है, this is the regional cooperation। अगर एक जगह water scarce थी तो उन्होंने जहाँ पे water abundance है उसने उसके साथ उसकी cooperation करके and both regions have a win-win situation, ठीक है। Last, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंदर तंजानिया का एक बड़ा प्रूवन एग्जांपल है, द सदर्न एग्रीकल्चरल ग्रोथ कॉरिडोर ऑफ तंजानिया, ठीक है। इसको कहते हैं सैकॉट। सैकॉट क्या करता है, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल बिजनेसेस, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज, फार्मर्स ग्रुप एंड गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया। अब ये पार्टनरशिप का एक उन्होंने वो बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। अब इसमें वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स स्मॉल स्केल फार्मर्स टू गेन एक्सेस टू मॉडर्न इनपुट्स। जो तंजानियन फार्मर्स हैं, ये सारे इंटरनेशनल एजेंसी और गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। इनके फार्म्स छोटे हैं बट दे आर गेटिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग रियली गुड एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब इससे क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग सच public private partnership, it mitigate कह सकते हैं, it reduces would be a better word, it reduces the impact of climate change। उसके बाद integrating into global market। तंजानिया itself is a very small country, ठीक है, लेकिन जब उसकी इंटीग्रेशन ऐसे चैनल्स के साथ हो रही है तो it gives them access to the bigger market, to the bigger access, ठीक है। तो वो जो रिसोर्स यहाँ पे उसको कम प्राइस मिली थी, वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके द फार्मर्स गेट बेटर प्राइसेस, द फार्मर गेट बेटर टेक्निक्स, और एक वही नॉलेज नेटवर्क आपका आ जाता है, ठीक है। अब आपकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में ये फार्मर्स को कनेक्ट किया जाता है, दे हैव मेक एग्रीकल्चर विच यूजुअली कंसिडर्ड इन रूरल एरियाज एज अ सबसिस्टेंस, ठीक है ना, कि आप एग्रीकल्चर इज नॉट फॉर द एक्सपोर्ट्स, इट्स नॉट for distributing in the neighboring villages or the neighboring districts, but it's basically just for themselves. लेकिन by bringing the smaller farmers into these global supply chains, वो उनको क्या करता है, it gives them better farming opportunities, it gives them an incentive to produce more, it gives them more incentive to utilize these technologies to become international participants in these global chains. Now the corridor has the potential to feed East Africa region and become major agricultural exporter just by this connection, public private partnership से, ठीक है। So it helps, हमारे पाकिस्तान के अंदर there is SMIDA, ठीक है, it helps you and it's a semi-government organization which helps you. So public private partnership is also one of the form by which we can have better resource management. Now concluding, I'm just going to give you that what we are going to learn in the next lecture. Again, I loved preparing that lecture, and I always love these topics because these are new. And remember that when we are doing this course in 2014, ठीक है, we are not supposed to study the concepts that was given in 1970s, 1980s, 1990s, because those are 10, 20, 30 years ago. Now when we are going into the job interviews, when we are going to compete in the competition exams, people are going to ask you about the latest concepts, ठीक है। So we need to keep abreast ourselves with the latest knowledge. As earlier in the first lecture I said, Kabi, the course is not just a bookish thing. You have to you have to go beyond the book, you have to search, you have to read yourself, and then you start understanding कि जी आपकी theory और practice में कितनी divergence और कितनी convergence है। Next में I'll talk about a new model,
कि जी हम नया मॉडल कौन सा हम डिस्क्राइब करते हैं which brings a better resource mobilization, resource utilization, resource conservation. ठीक है? And then what kind of technological innovations are happening in terms of this trade, what kind of technological innovations are happening in terms of environmental management, what kind of technological innovations are happening in terms of this institutional mechanisms. ठीक है? Then crisis, conflict हमने पढ़ा, लेकिन crisis जो हैं they are very interesting nowadays because there is not one crisis, there are multiple crises. The irony is that crisis multiple हैं and they are happening simultaneously. Just at this one point of time, you are dealing with political situation, you are dealing with economic, you are dealing with environmental, you are dealing with social, you are dealing with cultural. So many situations कि आपके कुछ वो जिससे कहते हैं local level पे कोई conflict चल रहा है, कोई provincial पे चल रहा है, कोई national पे चल रहा है, कोई international level पे. अब ये सारे conflicts, ये सारी crises simultaneously happen कर रही हैं. Planner क्या करेगा? Let's see how to deal with these simultaneous multiple crises. Then the relationship between वही government and citizen. ठीक है, गवर्नमेंट और सिटीजन का आपस में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से it is changing. Earlier state was considered to be much stronger player, लेकिन अब क्या होता जा रहा है? The change is coming that the citizen is becoming much stronger. Citizen के अंदर ज़्यादा vibrance आ गई. Citizen is more informed. Citizen के पास ज़्यादा, it has more forums to speak, as we just talked about the virtual or the internet communities. ठीक है. Then global trade in resources, कि जो resources हैं, because there are resource producers, there are resource consumers. अब इनके दरम्यान में किस किस्म का trade होगा, कैसे trade होगा, and how we can create a win-win situation, right? And later on, what we are going to talk about is the new models of engagement, because engagement is very important, participation is very important. लेकिन not similar what we have discussed in the last lecture. What are the new, वो हमने पढ़े थे, what are the new models for for natural resource management. यहाँ पे हम engage कर रहे हैं कि जी जब मैं कहता हूँ कि जी participatory development या participatory approach हमने use करनी, उनके लिए कोई engagement के लिए कोई incentive तो होना चाहिए. और how you are going to engage all these stakeholders, push them towards a common goal, how it's going to be happening. So that would be some of the highlights for my next lecture, and that would be lecture number 9. And I believe that by now you have understood that natural resource management and planning is not just something that can be just read. It has to be seen. It has to be, it is a practical thing. So if you have any queries, feel free to ask. If you have any questions, look out for them. Don't just pose a question which just comes during the lecture. I wish I would have done that, but search for it, and you will definitely start feeling that these are necessary, because it's you, me, us who have to solve these natural resource planning issues, because it is a complex situation, and given the expertise we have to simplify it, and until we don't simplify we can't solve it, because it will further create major problems. Thank you very much, and look forward to seeing you in the next lecture.